The question का answer actually there are 3 different type of kidney. Pronephros kidney, mesonephros kidney, and metanephros kidney. Pro माने ancient और primitive. Meso मतलब moderate, मतलब neither primitive nor modern. Meta मतलब क्या है ना, most advanced kidney is called as what? Metanephros. And pronephros is found in case of cyclostomes. साइक्लोस्टोम आप लोग पढ़े हो ना, जिनका माउथ क्या होता है ना, सर्कुलर होता है. साइक्लो मींस सर्कुलर, स्टोमा मींस माउथ, सो कॉल्ड एज सर्कुलर माउथ और साइक्लोस्टोम्स. इन केस ऑफ फिश एंड एम्फीबियंस, it is what? Mesonephros kidney. And in case of amniote, एमनियोट के केसेस में क्या है ना, मेटानेफ्रस किडनी. एंड एमनियोट के केसेस में कौन कौन आता है? द रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स. These 3 are collectively called as what? एमनियोट्स. तो फिर मेटानेफ्रस किडनी किसमें होगा ना, एमनियोट्स में होंगे. तो फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एनाम्नियोट में कौन कौन आता है ना, साइक्लोस्टोम, फिश, एम्फीबियंस, ये सब क्या है? एनाम्नियोट से. तो एमनियोट कौन हो गया? रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स. इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन के एमनियोट क्यों बोलते हैं, कल इतना समझ लीजिए कि इनके चारों तरफ, एम्ब्रियो के चारों तरफ एमनियन लेयर प्रेजेंट होगा. If the layer of amnion is present, then it is called as amniote. If it is absent, called as anamniotes. आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूरिन फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप. हम लोग का यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. चेक कर लीजिए, करेक्ट है. अभी हम लोग सेकंड स्टेप में आते हैं, यूरिन फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप, दैट इज सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. Selective tubular reabsorption as the reabsorption of selected substance. Reabsorption of selected substance occurs in selected part of nephron. So it is called a selective tubular reabsorption. मतलब क्या है ना, नेफ्रॉन का देखो 3-4 अलग अलग पार्ट है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, राइट. So everything will be not absorbed in every part of the nephron. पीसीटी में जो एब्जॉर्ब हो रहा है हो सकता है कि डीसीटी में ना, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो असेंडिंग में ना हो कि डिसेंडिंग में ना हो. तो सिलेक्टेड पार्ट में सिलेक्टिव चीज एब्जॉर्ब होगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. मैं डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन कर देता हूं. मैं नेफ्रॉन का एक डायग्राम बनाऊंगा एंड कहां पे क्या क्या एब्जॉर्ब हो रहा है मैं बताऊंगा. एब्जॉर्प्शन मीनिंग व्हाट? एब्जॉर्प्शन मींस व्हाट? फ्रॉम नेफ्रॉन इनटू ब्लड और फ्रॉम ब्लड इनटू नेफ्रॉन. फ्रॉम नेफ्रॉन इनटू ब्लड मींस जो मैं एरो मार्क दूंगा वो नेफ्रॉन से बाहर की तरफ जाएगा, समझे कि नहीं. एंड उसका रिवर्स पहले सुन लीजिए, डायग्राम बनाने में इजी होगा. इसका जो रिवर्स है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर सिक्रीशन. ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या है ना, हम लोग पढ़े थे टिश्यू चैप्टर में. इसी चैप्टर में शायद मैंने बताया था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में
कि PCT is made up of which epithelial tissue? Na microvilli, that is cuboidal brachiopoid. याद आया? Loop of Henle is made up of squamous, cuboidal, cubical, and DCT is made up of what ना cuboidal. तो अलग अलग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में अलग अलग एपिथेलियल टिश्यूज और सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है. नाउ दिस पर्टिकुलर ट्यूब्यूलर सिक्रेशन का मीनिंग क्या है ना? सेल्स ऑफ द ट्यूब्यूलर, ध्यान से सुनिए, दोबारा नहीं समझाएंगे. द सेल्स ऑफ द ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन सिक्रेट सम केमिकल्स. तो ये जो सब्सटेंस कौन सिक्रेट कर रहा है? तो सेल्स ऑफ द ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. ट्यूब्यूलर मतलब यार है यूनिफेरस ट्यूब्यूल को हम लोग ट्यूब्यूल बोल रहे हैं. तो यूनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन का जो सेल्स है वही सेल सिक्रेट कर रहा है. एंड दैट सिक्रेटरी सब्सटेंसेस विल बी एक्सक्रेटेड और रिलीज्ड इनटू नेफ्रिक फिल्ट्रेट. जो भी वो सिक्रेट करेगा सीधा किस में जाएगा? नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जाएगा एंड पासेस आउट थ्रू द यूरिन. तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? इनटू द नेफ्रॉन कि आउट फ्रॉम नेफ्रॉन? आउट फ्रॉम नेफ्रॉन तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. अरे फ्रॉम नेफ्रॉन होगा तो एब्जॉर्प्शन हुआ ना. इनटू द नेफ्रॉन होगा तो क्या होगा? सिक्रेशन. इसीलिए मैंने बोला गौर से सुनिए, आपका दिमाग इधर उधर घूमता है, ये दिक्कत है. तो पकड़ के रखिए, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा. ठीक है, ध्यान से सुनिए. एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है? फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड. सिक्रेशन मतलब क्या है ना? सिक्रेटेड बाय द ट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी एंड दैट इज एक्सक्रेटेड और डिस्चार्ज इनटू नेफ्रॉन इटसेल्फ. तो इनटू द नेफ्रॉन होगा ना. बार बार बोलने के बावजूद भी आप लोग का सुधार नहीं हो रहा है. माइंड इट. मैं यहाँ पे खाली ऐसा नेफ्रॉन कर रहा हूँ जो आपको ये डायग्राम समझाने में मुझे इजी हो. मैं यहाँ पे पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि इजी होगा मुझे एक्सप्लेन करने में. दिस इज एक्चुअली टुवर्ड्स कॉर्टेक्स. ये हो गया आउटर मेडुला. and this is inner medulla. तो मैं यहाँ पे सिर्फ नेफ्रॉन का पार्ट दिखाया, उसे ग्लोमेरुलस का पार्ट मैंने दे दिखाया, सीधा मैं बॉमन्स कैप्सूल से दिखाया हूँ. ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का होगा, passes through the PCT, then descending loop of Henle, then ascending the DCT, then collecting duct. राइट. याद करिए हमने पढ़ा था कि PCT में ट्रांसपोर्टेड क्यूबिडल एपिथेलियम होता है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन PCT. तो व्हाट आर द कंपोनेंट व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड इन द PCT? Bicarbonate ion, different type of hormone, different type of vitamin, then your chloride ion. These are absorbed approximately
90%. So 90% of the bicarbonate, hormone, vitamin, chloride, ion, etc. absorbed in the PCP part. Then NaCl 60%. Water 70%. Different type of nutrient like glucose, that is amino acids, ये एब्जॉर्ब होता है 100%. पोटेशियम 60%. यूरिया 50%. यूरिक एसिड approximately 95%. 90 to 95, तो better you write 90%. 90 to 95 होता है, ठीक है, 95 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. ये जितने भी है मैंने आपको क्या दिखाया, फ्रॉम नेफ्रॉन इनटू ब्लड, रहेगी नहीं. अब देखिए नेफ्रॉन से डायरेक्ट ब्लड में तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि नेफ्रॉन और ब्लड के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा. तो ये जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो कहां से, नेफ्रॉन से इंटरस्टिशियल फ्लूइड. देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो एंट्री करेगा किसमें, ना लिम्फ होके अल्टीमेटली ब्लड में आएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. इसीलिए तो हम लोग पढ़े थे कि लिम्फ हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल दिस टू रिटर्न बैक इनटू व्हाट, ना ब्लड. समझ में आ गया. नाउ व्हेन दिस nephric filtrate is passes downward, this is called as descending limb of loop of Henle. And remember, the descending limb of loop of Henle is permeable to water and impermeable to, or almost impermeable to, different type of ions and salt. याद रखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. Permeable to water and nearly impermeable to. ये एनसीईआरटी का लाइन है. एनसीईआरटी में ये इम्परमेबल नहीं लिखा है, नियरली इम्परमेबल लिखा है. So it is nearly impermeable to salt or ions. So descending limb of loop of Henle is permeable to water. इसका मतलब है जैसे जैसे नेफ्रिक फिल्टर डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू पास करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा कि नहीं. एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा. एडिशनली मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ऑस्मोरेगुलेटर का जो ऑस्मोलाइट वगैरह क्या है, मैं पहले इसीलिए बताया था. सो एज द descending loop of Henle, the nephric filtrate is passing, the water absorption increases. Water absorption increase करेगा तो क्या होगा ना, osmolarity increase करेगा. तो highest osmolarity कहाँ पे होगा, cortex, outer medulla और inner medulla. हाँ, इसीलिए मैंने differentiate कर दिया. तो inner medulla में सबसे highest osmolarity होगा, and that is 1200 milliosmol per liter. I will explain before that. मैं इसको finish कर लेता हूँ, फिर उसका concept मैं बताऊंगा. Now the nephric filtrate is passing through the ascending limb of loop of Henle, and ascending limb of loop of Henle is just opposite to the descending. क्या है वो, permeable to salt or ions and impermeable to water.
And what are the absorption which is takes place when it is passing through the ascending? The NaCl, potassium ion, magnesium ion, chloride ion. Maximum NaCl absorb होता है. Apart from the NaCl absorption, other salt also absorbs when it is passes through the ascending limb of inlet, as because the ascending is permeable to salt and impermeable to water. तो धीरे धीरे जैसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट के थ्रू पास करेगा थ्रू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनलेट, तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी क्या होगा ना, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा. समझे? तो अल्टीमेटली कॉर्टेक्स में लो ऑस्मोलैरिटी होगा, यस और नो. आउटर मेडुला में उससे थोड़ा ज्यादा होगा ऑस्मोलैरिटी, एंड सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी कहां पे होगा? मेडुलरी इंटरस्टिशियम. मेडुलरी इंटरस्टिशियम ऑफ इनर मेडुला. ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का मतलब क्या? मैं हर चीज को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, बट कंडीशन से कि आप कितना सुन रहे हैं मेरे बात. मेडुला में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा उसको क्या बोलेंगे? मेडुलरी इंटरस्टिशियम. इंटरस्टिशियम तो हर जगह है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो हर जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी किस इंटरस्टिशियम में होगा? इनर मेडुला. ठीक है. नाउ व्हेन इट इज पासेस थ्रू दी डीसीटी, अब ये डीसीटी में आ गया, फिर से कॉर्टेक्स में आ गया. समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से कॉर्टेक्स में आ जाएगा डीसीटी में. तो डीसीटी में क्या क्या ऑब्जर्व होता है ना? NaCl, वाटर, फॉस्फेट आयन, then calcium, then bicarbonate ion. यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट में हमने लिखा है ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड, यहाँ पे फॉस्फेट भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि फॉस्फेट भी 100% एब्जॉर्ब होता है. When it is passes through the DCT, all these are absorbed, and DCT से भी नीचे की तरफ आएगा. नीचे में क्या है ना? कलेक्टिंग डक्ट. तो कलेक्टिंग डक्ट में जो पास करेगा, then again bicarbonate ion, sodium chloride, water plus urea also absorb. Urea also absorb. अब यहीं पे मेन टॉपिक, मेन कंटेंट यहां पे आते हैं. यूरिया कहां पे ऑब्जर्व हुआ? विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? नंबर 1 पीसीटी. और कहां पे ऑब्जर्व हुआ ना? कलेक्टिंग डक्ट, लोअर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट. दिखाई दे रहा है? नाउ देखिए, NaCl भी प्रेजेंट है, यूरिया भी प्रेजेंट है. कहां पे? इनर मेडुला की, आउटर मेडुला की, कॉर्टेक्स? इनर मेडुला में NaCl भी है, यूरिया भी है. एंड प्रेजेंस ऑफ दीज टू सॉल्यूट, हम लोग पढ़े थे फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कि NaCl एंड यूरिया आर द स्ट्रॉन्ग ऑस्मोलाइट व्हिच इंक्रीज द ऑस्मोलैरिटी. तो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था कि हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी कहां पे है? इनर मेडुला में, because of the presence or retention of what ना? NaCl and urea. इन्हीं दोनों के वजह से इनर मेडुला में सबसे हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी होता है 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर. आउटर मेडुला में होगा 600 to 800 मिलीऑस्मोल पर लीटर, एंड कॉर्टेक्स में होगा 200 to 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर. तो हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी इन द इनर मेडुला ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ NaCl एंड यूरिया. आप सोचिए, यूरिया का कंसेंट्रेशन अगर सपोज भी बहुत ज्यादा हो गया तो ऑस्मोलैरिटी 1200 को क्रॉस कर जाएगा. समझे कि नहीं? अगर 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर से भी ज्यादा हो गया ऑस्मोलैरिटी, तो वाटर ज्यादा प्रेजेंट रहेगा ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर निकलेगा नहीं, यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा. मोर वाटर विल बी एंटर्ड, मोर वाटर विल बी रिटेन, स्वेल करेगा बॉडी. इसीलिए
जिनका यूरिया ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड में, उनका बॉडी स्वेल होता है, पैर जो है लेग वगैरह स्वेल कर जाता है। ये इंडिकेट क्या करता है कि किडनी इज नॉट प्रॉपरली एक्सक्रेटिंग द यूरिया फ्रॉम द बॉडी, मींस द किडनी इज गेट फेल्ड, किडनी फेलियर। समझेगी नहीं? किडनी का फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू रिमूव द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ यूरिया फ्रॉम द बॉडी। ठीक, ये इंडिकेट करेगा अगर ब्लड में, यूरिन में, अगर यूरिन में यूरिया कम हो गया, ब्लड में यूरिया ज्यादा हो गया, तो इंडिकेशन करता है किडनी फेलियर। एंड किडनी फेलियर का अल्टीमेटली इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट क्या है ना? डायलिसिस। अब मैं बैक टू द पॉइंट अगेन, यूरिया अगर इंक्रीज किया तो ये यूरिया क्या होगा ना? इमीडिएटली एंटर इनटू व्हाट? किसमें एंट्री किया वो देखिए तो, कहां एंट्री करता है ये यूरिया ना? एंटर इनटू द लूप ऑफ हेनले अगेन। किस लूप ऑफ हेनले में एंट्री किया? असेंडिंग की डिसेंडिंग? तो एक्सेस होगा यूरिया तो फिर से वो लूप ऑफ हेनले में आके एक्सक्रीट होके निकल जाएगा। अरे है कि नहीं? अगर मिनिमम क्वांटिटी से ज्यादा हो गया, सॉरी मैक्सिमम क्वांटिटी से ज्यादा हो गया, तो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया विल बी एक्सक्रेटेड आउट। तो इसीलिए यूरिया का वॉल्यूम इनर मेडुला में हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा कि नहीं? एंड दैट इज वेरी एसेंशियल। अगर यूरिया बहुत कम हो गया तो यहाँ पे इनर मेडुला में हाईएस्ट ऑस्मोलरिटी मेंटेन नहीं होगा। अगर ऑस्मोलरिटी मेंटेन नहीं होगा तो यूरिया आपके बॉडी से एक्सक्रेट हो जाएगा, सॉरी वाटर आपके बॉडी से एक्सक्रेट हो जाएगा। इसलिए हम लोग पढ़े थे ऑस्मो रेगुलेटर। We have to maintain the water balance. We have to maintain the salt and solute balance in the body. अगर concentration maintain नहीं होगा तो volume of water also, that is what lost from the body. And who maintain that osmolarity in the inner medulla? Medullary interstitium, the urea and NSA. समझ में आ रहा है? बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। मैंने आपको, मैं जो भी पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब लिखूंगा, डोंट वरी। ये आपको जो ग्रीन कलर में मैंने मेंशन किया, ये सारे के सारे क्या है? एब्जॉर्ब्स। दिखाई दे रहा है? अभी मैं ट्यूबुलर सिक्रीशन में आता हूँ। दूसरे कलर में हम इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। H+ आयन है, क्रिएटिनिन, सल्फ्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सल्फ्यूरिक एसिड, some drugs, toxins, पिगमेंट, ये सब क्या है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है? ये सब ट्यूबुलर सिक्रीशन है, secreted by the tubular part of the cells. Also ammonia. तो पीसीटी में जो ट्यूबुलर सेल है वो क्या क्या सिक्रेट कर रहा है ना? H+, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, ड्रग्स, टॉक्सिन, पिगमेंट एंड अमोनिया। तो डीसीटी में आता है, डीसीटी में H+ आयन भी सिक्रेट होगा, पोटेशियम आयन भी सिक्रेट होगा एंड अमोनिया भी सिक्रेट होगा। तो सिक्रेशन ऑफ H+ ion, potassium ion and ammonia to be takes place by the tubular cell of BCT. Clear है? Now when it is passing into the collecting duct, देखिए तो collecting dot में कौन सा चीज सिक्रेट हो रहा है? The potassium ion and ammonia. H+ भी होगा, तो आप एक काम करिए, पोटेशियम नहीं अमोनिया को हटा दीजिए, H+, मोस्टली H+ ज्यादा होता है, H+ आयन ज्यादा।
देखिए H प्लस आयन तीनों जगह पे हो रहा है, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। आप लोग पढ़े हो यूरिन इज एसिडिक और यूरिन इज अल्कलाइन। यूरिन क्या है 6.7 to 6.8, क्या हुआ एसिडिक। तो ह्यूमन का जो यूरिन है स्लाइटली एसिडिक है, एंड एसिडिटी ऑफ द यूरिन इज बिकॉज ऑफ व्हाट, नंबर 1 यूरिक एसिड प्रेजेंट, नंबर 2 H प्लस आयन। ठीक है ना आपको। सो H प्लस आयन आप लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन एंड कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस मींस pH डिक्रीजेस और एसिडिटी इंक्रीजेस। तो एसिडिटी ऑफ द urine is because of the excretion of H plus ion by the tubular cells, correct है। ये डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, खत्म नहीं हुआ है, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट सी, देखिए यहाँ पे भी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, 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 दिख रहा है आपको। What is the meaning of obligatory, ध्यान से सुनिएगा, what is the meaning of obligatory and what is the meaning of facultative? Obligation means completely and facultative मतलब optional, complete मतलब 100%, means without any conditions, no condition means obligation, with condition means facultative। आपका बॉडी का कंडीशन कुछ भी हो, आपका बॉडी फ्लूइड का कंसेंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन कुछ भी हो, मतलब आपके बॉडी में कम वाटर हो या बॉडी में ज्यादा वाटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना वाटर एब्जॉर्ब होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, कंडीशन चाहे कुछ भी हो, then this is called as what, obligatory water absorption, and obligatory water absorption takes place in the PCT and descending loop of Henle। तो ये PCT में जो 70% वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, प्लस व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द descending loop of Henle where the water absorption it is compulsory whatever met the conditions of the body is, but condition के रिस्पेक्ट में अगर आपके बॉडी में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, वाटर स्कैर्सिटी ज्यादा है, वाटर अगर स्कैर्सिटी है तो आपकी बॉडी के लिए वाटर रिटेंशन करना है कि वाटर को एलिमिनेट करना है, रिटेन्ड करना है, मतलब मोर वाटर एब्जॉर्प्शन की लेस, मोर वाटर एब्जॉर्प्शन। उस कंडीशन में डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर आपके बॉडी में वाटर रिजर्व, अगर एब्जॉर्प्शन कम करना है, एक्सक्रीशन ज्यादा करना है, एलिमिनेट वाटर करना है ज्यादा, तो वाटर एब्जॉर्प्शन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा ना, कम होगी, समझे कि नहीं। तो ये कंपलसरी हुआ कि ये ऑप्शनल हुआ, फैकल्टेटिव और ऑप्शनल। लाइकवाइज इधर देखिए, NaCl here present, yes or no, here NaCl present, here NaCl present, here also NaCl is absorbing। NaCl भी देखो PCT, ascending limb of Henle, DCT and collecting dot में भी NaCl absorb हो रहा है कि नहीं। So NaCl absorption in the PCT and ascending limb of loop of Henle is what, na obligatory, and NaCl absorption in the DCT and collecting duct is what, facultative, समझे। Please continue the point। Maximum absorption occurs in PCT, whereas minimum absorption occurs in ascending limb of loop of Henle। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
highest osmolarity in inner medulla is due to retention of urea and NaCl in medullary interstitium. एंड ये हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी कितना है 1200 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर। बाकी जो मैंने वैल्यू बताया था वो सब मैं दूसरे डायग्राम में करूंगा, इसीलिए जरूरत नहीं है यहाँ पे टेंशन लेने की। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी वाटर एंड NaCl एब्जॉर्प्शन। पहले वाटर का कर लेते हैं। ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन PCT and descending loop of Henle. Obligatory or compulsory NaCl absorption takes place in PCT and ascending loop of Henle. Facultative, optional, water absorption takes place in PCT and collecting duct. वैसे ही facultative or optional NaCl absorption to be takes place in DCT and NaCl absorption DCT and collecting duct. पॉइंट ये है ऑब्लिगेटरी मतलब क्या है कंपल्सरी। कंपल्सरी होने के लिए किसी का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिक होगा। मतलब ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन जब फोर्सफुली होता है, ऑप्शनल होता है, मींस देयर मस्ट बी ए नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ केमिकल और हार्मोन और एनी काइंड ऑफ दैट इज व्हाट ना मीडिएटर। अरे है कि नहीं? तो वाटर एब्जॉर्प्शन फैकल्टेटिव इज रेगुलेटेड बाय anti-diuretic hormone, otherwise called as vasopressin. Whereas facultative NaCl absorption takes place in the DCT and collecting duct is to be controlled by aldosterone. मैं और भी बेटर वे में बताऊंगा कि अभी हमने रैस मैकेनिज्म पढ़ा था, तो रैस मैकेनिज्म में एल्डोस्टेरोन का क्या रोल था? NaCl एब्जॉर्प्शन था कि नहीं? प्लस दैट आल्सो वाटर एब्जॉर्प्शन में भी उसका रोल है, क्योंकि NaCl को वाटर फॉलो करेगा ऑस्मोसिसली। तो इसीलिए वाटर एब्जॉर्प्शन में नॉट ओनली ADH और vasopressin हैज द रोल बट आल्सो हैज द रोल ऑफ वाटर एल्डोस्टेरोन। बट NaCl एब्जॉर्प्शन में किसका एक्सक्लूसिव रोल है? एल्डोस्टेरोन। मैं आपको एलैबोरेटली और बताऊंगा, अभी खाली मैं पॉइंट करके हिंट्स करके छोड़ दिया। कंप्लीट है।
Yes or no? चले आगे. So moving to the next page. Obligatory water absorption and facultative water absorption. तीन पॉइंट लिखूंगा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. Occurs in PCT and descending in property. It occurs in PCT and collecting after. Point number 2. It is independent of plasma osmolarity. It is depends on the plasma osmolarity. इंडिपेंडेंट होगा ना, ये तो कंपलसरी वाटर एब्जॉर्प्शन है. तो इंडिपेंडेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी फ्लूइड की इंडिपेंडेंट होगा. इंडिपेंडेंट not depends on the osmolarity of body fluid. It depends on the osmolarity of body fluid. And obligatory में क्योंकि water absorption compulsory है, so here the no role of ADH or vasopressin. Here it is, occurs in presence of ADH, antidiuretic hormone. I will discuss everything about ADH. Now we are coming to the last topic of the urine formation, that is tubular secretion. So here the cells of uriniferous tubular nephron cells of the uriniferous tubules or nephron secrete some chemical or substance into the nephrofiltrate to excrete. An example मैंने आपको दिया था, H plus and NH3, K plus, the creatinine, sulfuric acid, then toxins, drugs, pigments, etc. And very important point, the H plus excretion through urine makes the urine acidic.
And the next important point, you know, tubular secretion, देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके केस में ग्लोमेरुलस एब्सेंट होता है. जस्ट इमेजिन करिए ग्लोमेरुलस एब्सेंट है तो फिल्ट्रेशन होगा. तो फिल्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो उनके केस में एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस एक्सक्रीट कैसे होगा. एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एक्सक्रीट कैसे होगा ना. उनके केस में ट्यूबुलर सिक्रेशन सबसे ज्यादा हाईली एफिशिएंट है. तो हमारे केस में ये लेस एफिशिएंट है कि हाईली एफिशिएंट है. लेस, क्योंकि हम लोग का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव है. So it is the only mode of excretion in those animals is the only mode of excretion in those animals which lack glomeruli. For example हम देते हैं marine fishes and desert amphibians. Desert fishes and marine amphibians के केसेस में glomeruli absent होता है, इसीलिए it is the only mode of excretion. Clear है? Now दो तीन पॉइंट है, जैसे कि फर्स्ट है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस. हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस का मतलब क्या है? Substance which get 100% absorbed from nephron. जो नेफ्रॉन से 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा, मीन्स व्हाट? तो absent in urine or present in urine? So absent in urine are called as high threshold substance. Example mainly glucose, amino acid. जैसे फॉस्फेटाइंस भी होगा. और यहाँ पे क्वेश्चंस आता है ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना है? ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड वैल्यू है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, मींस 100 ml of blood. Per 100 ml or deciliter of blood, what is the amount of glucose? Threshold value of glucose क्या है ना? 100 milligram per 100, that is 180 milligram per 100 ml of blood. इसका मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए. इसका मीनिंग ये है कि up to 180 milligram, 100% glucose will be absorbed from the nephron. नहीं समझे? Up to 180 मिलीग्राम पर 100 ml of blood, आपके ब्लड में मैक्सिमम 180 मिलीग्राम ग्लूकोज तक 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा नेफ्रॉन में. तो ब्लड में एब्सेंट होगा ग्लूकोज. लेकिन आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल अगर 180 को क्रॉस कर गया, समझे, 180 mg पर 100 ml को क्रॉस कर गया ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में, तो 180 के बाद जितना इंक्रीज रहेगा उतना एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू यूरिन. So in that case the urine with glucose, that is called as glycosuria. क्या बोलते हैं उसको? Glycosuria, that is urine presence with glucose, means that is a indication of what? Diabetes mellitus. तो diabetes mellitus में क्या होता है ना, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई, that is called as what ना? Hyperglycemia.
बात को समझ रहे हैं? तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा तो ब्लड ग्लूकोज 100% एब्जॉर्ब नहीं होगा। 100% कब तक एब्जॉर्ब होगा? 180 तक, एंड दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वैल्यू। हाँ, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, low threshold substance means those substance which not 100% absorb, means appear in the urine, so those who are not 100% absorb are called as low threshold substance। मैं यहाँ पे मेन एग्जांपल देता हूँ, देखिए यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, बाकी भी हम लोग लिस्ट में ऑलरेडी दिए हैं, वो डायग्राम में सब कुछ मेंशन है, राइट। नेक्स्ट इज नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। Non-threshold substance means those which 0% absorb, that is 100% excreted through urine। समझ में आ गया? जो 100% एक्सक्रेट हो रहा है मतलब 0% एब्जॉर्ब हो रहा है, then that is called as non-threshold substance। Example, your creatinine, uric acid, etc। ये जो है 100% एक्सक्रेट हो जाता है यूरिन से। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अभी हम लोग डिसऑर्डर्स पे आते हैं। हम टेक्निकल वर्ड, उसी वर्ड को लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे वहीं पे कोरिलेटेड होगा। Disorders of excretory system, number 1, Bright's disease, or that is also called as nephritis। Bright's disease और nephritis, देखो nephritis में क्या होगा ना, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी होगा। Inflammation of kidney is called as Bright's disease or nephritis। Number 2, glomerulonephritis। Glomerulonephritis means inflammation of glomeruli or glomerulus। Number 3, cystitis, that is inflammation of urinary bladder
Number 4, renal calculi, जिसको पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं किडनी स्टोन। Formation and deposition of crystallized insoluble mass of oxalate। तो सोडियम ऑक्सैलेट भी हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट भी हो सकता है। ये एक्चुअली क्रिस्टलाइज्ड है इनसॉल्युबल मास इन किडनी। कहीं पे भी हो सकता है, अब माइनर कैलिक्स में हो सकता है, मेजर कैलिक्स में हो सकता है, पेल्विस पार्ट में भी डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा कि नहीं? अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो यूरिन पैसेज ठीक से होगा? नो, and that leads to the less amount of urine needs to be passes। उसके वजह से धीरे धीरे क्या होगा ना, किडनी इन्फेक्टेड हो जाएगा एंड मे बी द किडनी फेलियर। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको जितना ज्यादा वाटर पिएंगे ना, उससे पता क्या होगा ना, यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगा तो उसका फोर्स से धीरे धीरे इरोजन की वजह से हो सकता है। छोटा साइज अगर किडनी स्टोन होगा तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा ना, कंप्लीटली लॉस हो सकता है। नहीं तो मेडिसिन के थ्रू भी उसको, ऑपरेशन के थ्रू भी करा सकते हैं। नंबर 5, ग्लाइकोसूरिया। Glycosuria means presence of glucose in urine। Number 6, हेमाटूरिया। हम लोग अभी तक जितने भी पढ़े, कहीं पे ब्लड सेल्स फिल्ट्रेट होता है कि प्लाज्मा फिल्ट्रेट होता है? अगर ब्लड सेल यूरिन में प्रेजेंट हुआ, क्या इंडिकेट करता है? देयर इज ए प्रॉब्लम इन द ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है वहां पे प्रॉब्लम है, इसीलिए तो ब्लड सेल एंट्री कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब इंडिकेशन है, इससे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे। नंबर 7, polyuria। Polyuria means more urine formation। What is the quantity of the urine formation per day? 1.5 लीटर। अगर 1.5 लीटर से ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो तो क्या इंडिकेशन है ना, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा ना, क्वांटिटी ऑफ यूरिन इंक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन? एडीएच। एडीएच मैंने बताया था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर एडीएच कम हो गया तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो वाटर एलिमिनेशन ज्यादा होगा, तो यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन वॉल्यूम इंक्रीजेस, कॉल्ड एज पॉलीयूरिया। नंबर 8, यूरेमिया। इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया कंटेंट। increased blood urea content is called as what na, uremia। तो conditions देगा कि which of the following condition confirm the kidney failure, polyuria की uremia? कौन सा कंडीशन आपको कंफर्म करता है कि किडनी फेल्ड है, किडनी नॉट प्रॉपर्ली फंक्शनिंग? यूरेमिया। अगर ब्लड में यूरिया ज्यादा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फिल्ट्रेशन इज नॉट प्रॉपर्ली ऑकरिंग। इट मींस व्हाट ना, किडनी इज नॉट प्रॉपर्ली डूइंग द फंक्शंस, राइट? नंबर 9, pyuria। Pyuria means pus cells present
more in urine. भाई what is the meaning of pus cells? ना pus cells क्या है, dead neutrophil. एंड आप लोग पढ़े हैं कि न्यूट्रोफिल इज द सोल्जर ऑफ द बॉडी, करेक्ट? अगर न्यूट्रोफिल का क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, ये कंडीशंस क्या आपको सिग्निफाई करता है कि आपका बॉडी में इन्फेक्शन सीवियर है. अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो न्यूट्रोफिल का, डेड न्यूट्रोफिल का क्वांटिटी ज्यादा होगा, एंड डेड न्यूट्रोफिल होगा तो दैट विल क्रिएट ना पस सेल्स. एंड ये पस क्या करता है ना, यूरिन के थ्रू अगर ज्यादा एक्सक्रीट होगा. नॉर्मली यूरिन का, अगर आप हेल्दी ह्यूमन बीइंग का यूरिन अगर आप डायग्नोस करेंगे ना, तो उसमें भी ब्लड सेल्स होते हैं, बहुत ही रेयर, लेकिन पस सेल्स होते हैं. ब्लड सेल्स होते हैं बहुत ही कम, लेकिन पस सेल्स होते हैं. अगर ये पस सेल का क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गया तो क्या है, infection. Mostly infection occurs in the urinary tract. तो ये सब क्या एबनॉर्मलिटी है कि नॉर्मलिटी? हाँ, इसको देख के हम लोग को पता चलता है. इसीलिए कोई भी डिजीज है तुरंत हम लोग का ब्लड टेस्ट कराया जाता है, यूरिन टेस्ट कराया जाता है कि नहीं? समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे.